సాయిరామ్. మరికొద్దిసేపట్లో ప్రశాంతి నిలయంలోని సాయి కుల్వంత్ సభామండపం నుండి ప్రత్యక్ష ప్రసారాలను మీరు వింటారు. దయచేసి వేచి ఉండండి. Sai Ram, dear listeners, live broadcast of the proceedings from the Sai Kulwant Hall at Prasanthi Nilayam will follow shortly. Please stay tuned. సాయిరామ్. మరికొద్దిసేపట్లో ప్రశాంతి నిలయంలోని సాయి కుల్వంత్ సభామండపం నుండి ప్రత్యక్ష ప్రసారాలను మీరు వింటారు. దయచేసి వేచి ఉండండి. श्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सेदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्रयवतु गणेश
सरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ नमो भगवते रुद्राय। ॐ नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इषवे नमः। नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुदते नमः। या तैष शिवतमा शिवं बभूवते धनुः। शिवा शरव्याया तव तया नो रुद्रमृडया। या ते रुद्रशिवा तनुरघोरा पापकाशिनी। तया नस्तनुवाशन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीः। याविषं गिरिशन्तहस्ते विभर्ष्यस्तवे। शिवाङ्गिरित्रतां कुर्वाहि पुरुषं जगत्। श्रीवेदवचसा त्वा गिरिशाच्छावदामसि। यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मगुं सुमना असत्। अध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषक्। अयैगश्च सर्वान् जम्बयन् सर्वाश्च यातु धान्यः। असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुः सुमङ्गलः। ये चेवागुं रुद्र अभितो दिक्षश्रता। सहस्रशो वैशाखुं हेडयीमहे। असव्यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः। उदैरं गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः। उदैनं विश्वभूतानि सदृष्टो मृडयाति नः। नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीडुषे। अथो ये अस्य सत्त्वानोऽहं तेभ्यो करण्डमः। प्रमुञ्च धन्वनस्त्वमुभयोरात्नियोज्य। याश्च ते हस्तैषवः पराता भगवो वपा। अपतत्यधनुस्त्वगुं सहस्राक्षशते सुधे। निशीर्य शल्यानां मुखा शिवो नः सुमना भव। विज्रं धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवागुम् उता। अनेशन्नस्येषव आभुरस्य निशं गतिः। याते हेतमीडुष्टमहस्ते बभूवते धनुः। तयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुजा। नमस्ते अस्त्वायुधाय नातताय धृष्णवे। उभाभ्यामुतते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने। परिते धन्वनो हेतिरस्मान् मृणक्तु विश्वतः। अथो य इषुदिस्तवारे अस्मन्निदेहितम्। नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय। त्रयम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये दिशां च पतये। नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये। नमो नमः सस्मिञ्जराय त्रिशीमते पथीनां पतये। नमो नमो बब्लुषाय विव्याधिनेन्द्राणां पतये। नमो नमो हरिकेशाय पवीतिने पुष्टानां पतये। नमो नमो भवस्य हेत्यै जगतां पतये। नमो नमो रुद्राय तथा विने क्षेत्राणां
पतये नमो नमः सूताय हन्त्याय वनानां पतये नमो नमो रोहिताय स्थपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये नमो नमो भवन्तये वारिवस्कृताय औषधीनां पतये नमो नम उच्चैर्घोषाय क्रन्दयते पत्तीनां पतये नमो नम कृत्स्नवीताय धावते सत्त्वनां पतये नमः नमः सहमानाय निव्याधिना व्याधिनीनां पतये नमो नमः ककुभाय निषङ्गिणे सेनानां पतये नमो नमो निषङ्गिण इषुधिमते तस्कराणां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते सायूनां पतये नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां पतये नमो नमः श्रीकाव्यभ्यो जिगागुंसद्भ्यो मुष्णतां पतये नमो नमोऽसिमद्भ्यो न कंचरभ्यः प्रकृन्तानां पतये नमो नम उष्णीषिणे गिरिचराय कुलुञ्चानां पतये नमो नम इषुमद्भ्यो धन्वाविभ्यश्च वो नमो नम आतन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च वो नमो नम आयच्छद्भ्यो विसृजभ्यश्च वो नमो नमोऽस्यद्भ्यो विद्यद्भ्यश्च वो नमो नम आसीनेभ्यः शयानेभ्यश्च वो नमो नमः स्वपद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च वो नमो नमस्तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो अश्वेभ्यो अश्वपतिभ्यश्च वो नमः नमः व्याधिनेभ्यो विविध्यन्तेभ्यश्च वो नमो नम उगराभ्यस्त्रिगुंहतेभ्यश्च वो नमो नमो घृत्सेभ्यो घृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो भ्रातेभ्यो भ्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यः शुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमः शत्रुभ्यः सङ्ग्रहीतृभ्यश्च वो नमो नमस्तक्षद्भ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः पुञ्जिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नमः इषुकृद्भ्यो धन्वकृद्भ्यश्च वो नमो नमो मृगयुभ्यश्वनिभ्यश्च वो नमो नमः श्वभ्यश्वपतिभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः कवर्दिने च व्युक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशाय च शिबिविष्टाय च नमो मेढुष्टमाय चेषुमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षेयसे च नमो वृद्धाय च समृद्ध्वने च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः आशवे चाजिराय च नमः शीघ्रियाय च शेभ्याय च नमः ऊर्म्याय चावस्वन्याय च नमः स्रोतस्याय च द्वीप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च परजाय च नमो मध्य
रमाय चापगल्भाय च नमो जगन्याय च मुद्नियाय च नमः सौभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः अर्वर्याय च कल्याय च नमः श्लोक्याय च वसान्याय च नमो वन्याय च कक्ष्याय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः आशुषेणाय चाशुरताय च नमः शूराय चावविन्दते च नमो वर्मिणे च वरुधिने च नमो बिल्विने च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दन्दभ्याय च अनन्याय च नमो धृष्णवे च प्रवृषाय च नमो दूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिणे च सुधिमते च नमस्तीक्ष्णे शवे च युधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः श्रुत्याय च मत्याय च नमः काट्याय च नेप्याय च नमः सोद्याय च सरस्याय च नमो नाद्याय च वैशन्ताय च नमः कोप्याय च वट्याय च नमो वस्याय च वस्याय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नमः ईद्रियाय च तप्याय च नमो वात्याय च रेश्म्याय च नमो वास्तव्याय च वास्तवाय च ॐ हर 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 ॐ नमः सोमाय च रुद्राय च नमः साम्राय च रुणाय च नमः शङ्गाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वधाय च दूरे वधाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो भक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः शम्भवे च मयो भवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमस्तेऽर्थ्याय च कूल्याय च नमः पार्याय च भार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमः आतार्याय च लाध्याय च नमः षष्प्याय च भेञ्जाय च नमः सिकत्याय च प्रवाह्याय च नमः इरण्याय च प्रपथ्याय च नमः हिगुंशिलाय च शयनाय च नमः कवर्दिने च पुलस्तये च नमो गोष्ठ्याय च गृह्याय च नमः स्तल्प्याय च गेह्याय च नमः काट्याय च गह्वरेष्ठाय च नमो हृदयाय च निवेश्याय च नमः पागुंसव्याय च रजस्याय च नमः शुष्क्याय च हरित्याय च नमो लोप्याय च लप्याय च नमः ऊर्व्याय च शून्याय च नमः पर्ण्याय च पर्णशध्याय च नमो पगुरमाणाय च विघ्नते च नमः आखिदते च प्रखिदते च नमो वक्किरिकेभ्यो देवानागुंहृदयेभ्यो नमो विक्षेणकेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो नमः आनिर्हतेभ्यो नमः आमीवत्केभ्यः द्रापे अन्धसस्पते दरिद्रन्नीललोहिता येषाम् पुरुषाणामेषाम् पशूनाम् माभेर्मारोमो येषाम् किञ्चनाममत या ते रुद्रशिवा तनो शिवा विश्वाभेषजे शिवा रुद्रस्य भेषजे तया नो मृणजीवसे इमागुं रुद्राय तवसे कवर्तिने जयद्वीराय प्रवरामहे मतिम् यथा नः शमसद्विपदे चतुष्पदे विश्वम् पुष्टम् ग्रामे अस्मिन्ननातुरम् मृणानो रुद्रो तनो मयस्कृते जयद्वीराय नमसा
धीमते यच्चञ्चयोश्च मनुरायजे पिता तदश्यामतवरुद्र प्रणीतौ मानो महान्तमुतमानो अर्भकं मान उक्ष्यन्तमुतमान उक्षितम् मानो वदेः पितरं मातमातरं प्रियामानस्तनुवो रुद्ररीर्षः मानस्तोकेतनये मान आयुषि मानो गोषु मानो अश्वेषुरीर्षः वीर्यान्बानो रुद्रभामितो बधिर्हविष्मन्तो नमसा विधेमते आयात्ते गोघ्न उत पूरुषघ्ने क्षयद्वीराय सुम्नमस्मेते अस्तु रक्षा च नो अरिच देव ब्रूह्यथा च न शर्म यच्छद्विवर्हा सुविश्रुतं गट्टसनं युवानं मृगण्ड भीममुपहत्नमुग्रम् वृणाचरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निवपन्तु सेना परिणो रुद्रस्य हेतर्वृणक्तु परित्वेषस्य दुर्मतिरघायो अवस्थिया भगवद्यस्तनुष्वमेध्वस्तोकायतनयाय वृणया मेडुष्टमशिवतमशिवो नः सुमया भव परमे वृक्ष आयुधन् निधाय कृत्रिं वसान आचर पिनाकं बिभ्रधा गहि विकिरित विलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगुं हेतयोऽन्यमस्मन्निवपन्तु ताः सहस्राणि सहस्रदा बाहुवोस्तव हेतयः तासामीशानो भगवः पराचेनामकाकृते सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अधिभूम्याम् तेषागुं सहस्रयोजने वदन्वानि तन्मसि अस्मिन् महत्यर्णवेऽन्तरिक्षे भवा अधि नीलग्रीवाशितिकण्ठा शर्वा अधः क्षमाचराः नीलग्रीवाशितिकण्ठादिवगुं रुद्र उपश्रिताः ये वृक्षेषु सस्पिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानामधिपतयोऽभिषिकास कवर्धिनः ये अन्येषु विविध्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान ये पथां पतिरक्षय ऐलभृताय व्युतः ये तीर्थानि प्रचरन्ति श्रुकावन्तो निषङ्गिणः य एतावन्तश्च भूयागुंसश्च दिशो रुद्रावितस्थिरे तेषागुं सहस्रयोजने वदन्वानि तन्मसि नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां ये तर्षे ये दिवि येषामन्नं वातो वर्षमिषवस्तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणा दश प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोद्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृणयन्तु तेयं निष्मो यश्च नो द्वेष्टितं भोजं वेदधामि त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् अर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यो रुद्रो अग्नव्यो अप्सुर ओषधीषु यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु ये ते सहस्रमयुतं पाशा मृत्यो मर्त्याय हन्तवे तान् यज्ञस्य मायया सर्वानवयजामहे मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा प्राणानां ग्रन्थिरतिरुद्रो मा विशान्तकः तेनान्येनाप्यायस्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि तमुष्टुयस्विषुधन्वायो विश्वस्य क्षयति भेषजस्य यक्ष्वा महेशौ मनसाय रुद्रं नमो भिर्देवमसुरन्धुवस्य अयं मे हस्तो भगवान् अयं मे भगवान्
प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः अजन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् शान्ति शान्ति शान्तिः Dearest Swami, considering ourselves blessed and fortunate to be given this heavenly opportunity to express our gratitude to you, O Sai Ma, we, your children of class 10th and 12th of Sri Satya Sai Higher Secondary School, place at your divine lotus feet a bouquet of songs and experiences entitled Dasta Evada, the story of a promise. Dearest Swami, at the tender age of 6, we entered the portals of your institution, uncertain and blissfully unaware as to where we were. Our minds too innocent to comprehend the magnanimity of your love and the opportunity to be in your physical presence. Our parents entrusted us in your care, and you took us into your fold so lovingly. You took a promise to take control of the reins of our lives. Swami, you became a mother, father, sibling, and friend. We had left everything, and you became our everything. Those were the days of great joy when we reveled
in your ever blissful company. Prem, do you remember the tantrums we threw in our first standard upon losing the chance to sit next to the white marble path which Swami would take for darshan? Oh yes, something we called the carpet chance. How long we would pine for that golden chance which gave us the added possibility of having a physical interaction with him. Our joy knew no bounds after experiencing his love at such close quarters. He would fulfill even the smallest of our desires. I am filled with nostalgia as I recollect those wonderful memories of Swami sending us loads of sweets and treats out of his utmost care and concern for us. I clearly remember those delicious safari chocolates that Swami would send us every day during our sports meet practice sessions. Speaking of sports meet, Nitin, do you remember the song we sang in his presence as a part of the sports meet? Indeed, brother, I do. The memory of singing in his divine presence is forever etched in our hearts. Swami, more than a decade later, we are here today to relive and cherish that sweet memory by singing that very song we sang in your presence. Oh sweet Lord Shyama, this body is yours, so is this mind. You are present in our every atom and every cell. Oh beautiful Sai, you are the giver of eternal bliss.
In the year 2010, during my first standard in the primary school, my parents had come to meet me on a Sunday. That day, I was injured in a freak incident. When my parents saw me in that condition, they were really disturbed. They were worried about me being all by myself in a hostel at the tender age of 6. So later that day, my mother prayed wholeheartedly to the altar at home. Swami, she prayed to you to show her a sign that you would always take care of me and guard me. That evening, as it was a Sunday, the primary school students had come to the Kulwant hall for Yad Darshan. Coincidentally, it was my first line chance. My mother was seated just behind the primary school students and was praying fervently to you. My father was seated in the doctor's block and he too was praying for my health. Swami, when you came for giving a darshan, you stopped right in front of me and called me. I was very confused at that point, so I didn't get up immediately. And the person behind me got up and took your pad namaskar. But you didn't move on. You again pointed at me and called me. My mother was closing her eyes and praying, so she didn't realize this. At that very moment, when I stood right in front of you, the lady sitting beside my mother called her and asked her whether it was her son standing near Swami. When my parents saw you blessing me, they were filled with joy and gratitude. Swami, you gave my mother the sign she prayed for and gave my parents a direct assurance that I was always under your protective care. You also instilled confidence in me. The very next day, my parents came to meet me. I was astonished to find that I was completely hale and hearty. Swami, you cured me and gave my parents confidence about my well-being. Sai Ma, I stand here today to offer my heartfelt gratitude at your divine lotus feet for always taking care of me and blessing me with your divine love and grace. I love you, Swami. Swami, in my first standard, you showed your omniscience by creating akshatas for me. Being a 6-year-old kid, I had forgotten my birthday. But being Sarva Antaryami Sai, you remembered and blessed me with a memory which I will cherish forever. Swami, I wish to narrate this incident in my mother tongue, Manipuri. Numit ado, ay natibang pandahing limakay ay kaubangam laroy. Shok ado, lishingan ni tara, jun gitang kunmarini. Shandagi matam o shilakpa, numit ki nung chuktam at iyapang nagpamatam ni. Swami na, paja kraba kumla machogi pijoan na laiting la duna, miyam gi maragtida, lingthog pirai. Karam na kaugani, ado numit to. Swami na, ay gi mamang lom dalaga, ay gunda nung shi na yung birami. Loina na, manggol arshirvat ka loina na, Swami na hangapal gi ching putok piraga, ay gi koktakta kikpirami. Adu pabulishu ay hag gyan takide, aduga ay hag na ching shingdo, kungachare hairaga, ay gi kuba mananda, chit na pasilaga thamki. Darshan loer ba matung, hostel daharak laba matamda, ay no ojada shinaki. Numit ado, kangaw na dum loy kre. Thangnaba numit, jun gitang kun mga, shok lishingan ni tara. Ako'y ba ang katakpi bo jana? Numit ado kitarik, part bote iki. Kangaw na ojana hangreg. Ngarang, Swami na hanggapal giching lang kibado, kanadano. Ay nakumki. Oja, ay ko'y rom dani oja. Oja na magkahangi. Ado di, ngarang napong numit taba, kanayaw bagi. Matamaduda, ay nagkangning sing lagahay ki. Oja, ngarang di ay gi-burden eh. Ay di kaurure. Pumna magpukang biri ba? Pumna magpu ubiri ba? Swami, sa imana, nacha siyang ipokpo na magpukang bido na. Swami na, hanggapal giching, ay gi koktakta, chay biki. Ay gi punchisin na hinglipokti, ay kaubangam leroy. Swami, nacha na, nahakicharan tambalda, hanna kurumjari, Sai Ram. Decades ago, the Mother of Divinity made a plea to the Divine Mother, a plea for a selfless cause. Our fellow residents went through great pains to access basic amenities. All she wanted was affordable health care, accessible education, and availability of clean drinking water.
And thus a promise was made. With that promise began the selfless saga of love and sacrifice. Years later, this very hamlet has transformed into a gift for the humanity, providing the best of facilities. That plea of one mother reaped benefits for many. That one promise benefited millions and most importantly, impacted us, his students. Swami, not only did you provide us with quality education free of charge, but also molded us to be better human beings. Swami, you love us so much that we have never felt the absence of our own mothers. Thank you, Swami, for everything you have given us. Could I have been where I am today had it not been for thee? Your greatest gift to us, Sai dearest, that's you. We offer our lives to you, O Lord, a mother so sweet, so true. We offer our lives to you.
during one of my great-grandmother's visits to Parthi for Seva, she was sitting in this very hall, and as usual, you with all your compassion came for blessing all the devotees pining for your grace. That day, as you walked past the ladies section, she was in tears of joy at the very sight of you. As you reached the gents section, a lady who was seated near her told her that she should not trouble Swami with all her problems. She thought to herself, if not you, Swami, whom else she could convey all her problems to? Just as this thought came into her mind, you came straight towards her, blessed her profusely. You even created vibhuti and gave it to her. When the lady devotees around her asked if she could part with some of the vibhuti, she gave it to them, and to her surprise, she found that the quantity of vibhuti hadn't diminished even by a bit. On innumerable occasions like this, you have reassured my great-grandmother that you will forever give her shade under the vast umbrella of your divine love. Swami, even before I was born, my mother had a wish that her child should study in your school. One night, you came into my mother's dream, where you were holding a child's hand and writing the syllable Om on a slate. This gave my mother assurance that you would give me admission to your educational institutions. Years later, when I was born, I was fortunate to receive the vibhuti you had given to my great-grandmother, after which the packet containing the vibhuti was never to be found. As per your will, I cleared the entrance exam and hence joined the primary school. Thereby, you fulfill my parents' wish. Dearest Saima, you have showered your undiminishing love across generations, and today I stand here to pay my gratitude to thee for always guiding and guarding me. Love you, Swami. Love you. One fine evening, our warden sir was giving a small talk and happened to mention that conversing with you, Swami, would get us closer to you. That day, before my dinner, I had a small conversation with you. The very same night, in my dream, you came and you blessed me by giving me Path Namaskar. You then went and sat on the throne. After some time, you beckoned me with a loving call, and I jubilantly ran up to the dais. You then patted my cheek and blessed me with vibhuti. You then looked at the people seated near you and said, Satyam, very good boy, no? And then the dream ended. But that was not over yet. After some time, we were watching a video of our hostel inauguration. While watching the video, I suddenly realized that the hall in the video was the very same place where you had come and blessed me in my dream. Swami, you had heard that silent wishful prayer of my heart and blessed me in an instant. Swami, thank you for answering our prayers and always being there for us. Thank you, Swami. Thank you. స్వామి, మా ఈ జీవితం అనే నాటకంలో మీరు విభిన్న పాత్రలు పోషిస్తూ వస్తున్నారు. ఒక బిడ్డ ఎటువంటి స్థితిగతులలో ఉన్నా తల్లి తనకు తన నిరంతర ప్రేమను పంచుతుంది అని కలిగే నమ్మకమే ఒక వాగ్దానం. అటువంటి దివ్యమైన ప్రేమను మీ సన్నిధిలో పొందాము స్వామి. ఎలాగైతే ఒక బిడ్డ అలజడిలోని ఆంతర్యం కేవలం తన తల్లికి మాత్రమే తెలుస్తుందో, అలాగే మా మదిలోని ఆశలన్నీ తెలుసుకుని మీరే తీర్చారు స్వామి. బిడ్డ ఎదిగే కొద్దీ తన వెన్నంటే ఉంటూ తన నడకను నడవడికను తన తండ్రి తీర్చిదిద్దుతాడు అన్న ధైర్యమే ఒక వాగ్దానం. స్వామి, ఈ జీవన సాగరములో మము తీరానికి చేర్చడానికై మీరు ఒక దిక్సూచి వలె దోహదపడ్డారు. ఒక శిష్యుడు గురువు దరిలోకి చేరినప్పుడు గురువు తనను ఉత్తమ పౌడిగా తీర్చిదిద్దుతాడు అని ఆ శిష్యుడికి గురువుపై కలిగే విశ్వాసమే ఒక వాగ్దానం. మేము తడబడిన ప్రతిసారి జగద్గురువైన మీరు మీ అభయహస్తాన్ని అందించి మా చెయ్యిని పట్టుకుని మమ్మల్ని మళ్ళీ సన్మార్గంలో నడిపించారు స్వామి. సుఖదుఖాలలోనైనా గెలుపోటంలలోనైనా తన సకుడు తనని ఎప్పుడూ విడువడు అని మిత్రుడికి కలిగే భరోసా ఒక వాగ్దానం. ఒక నిరంతర సఖుడిగా మేము జీవితములో ఎదుర్కొనే అన్ని వడుదుడుకులలోనూ మా తోడుగా ఉంటూ మాలో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని నింపుతూ మమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తూ వచ్చారు స్వామి. స్వామి, మా జీవితానికి మార్గదర్శనం చేస్తూ మేము వేసే
ప్రతి అడుగులోనూ మా తోడుగా ఉంటూ మా మనసులో ప్రేమ నింపుతూ మా ఈ జీవితాన్ని సంపూర్ణం చేశారు స్వామి. స్వామి, మా అస్తిత్వానికి మీరే మూలాధారం అయ్యాక ఇంకా మేము కోరేందుకు ఏమీ లేక మా మనసు మూగబోయింది స్వామి. మా మనసు మూగబోయింది.
పరిపూర్ణ ప్రేమమయి, ఆనందమయి, కరుణామయి అయిన సాయిమాత దివ్యశ్రీ చరణారవిందాలకు ప్రణామాలర్పిస్తూ అందరికీ సాయిరాం. నేను ఉండగా భయం ఎందుకు, ఇది మీరు మీ భక్తులకు ఇచ్చిన తిరుగులేని అభయం. ఒకసారి మీ జన్మదిన ఉత్సవాలు ముగిసిన తరువాత నేను, అమ్మ, నాన్నగారు భజనలకు బయలుదేరాం. మా ఇంటి నుండి కొద్ది దూరం ప్రయాణించాక వీధి మలుపు వద్ద పెద్ద బండరాయి పడి ఉన్నది. సరిగ్గా ఆ మలుపు తిరిగేసరికి నాన్నగారి బండి అదుపు తప్పింది. అమ్మ బండిపై నుండి జారిపడుతూనే స్వామి అని బిగ్గరగా అరిచారు. ఆమె వెన్నుభాగం ఆ బండరాయిను బలంగా ఢీకొన్నది. ఏమి జరిగిందో తెలుసుకొని అమ్మ కళ్ళు తెరిచి చూసేసరికి మీ చిత్రపటం కనబడింది. దానిపై నేను ఉండగా భయం ఎందుకు అని రాసి ఉంది. మేము కంగారుగా అమ్మను పైకి లేపడానికి ప్రయత్నించాం. అమ్మ పడినది పెద్ద బండరాయి మీదనే అయినా ఆమెకేమీ తగలలేదని చెప్పారు. ఆమె స్వయంగా లేచి అక్కడే ఉన్న మీ చిత్రపటాన్ని చూపించారు. భక్త సంరక్షకుడైన మిమ్మల్ని చూసి మా హృదయాలు కృతజ్ఞతా భావనతో నిండిపోయాయి. స్వచ్ఛమైన మనసుతో, ఆర్తితో అడిగినదేదైనా దయాసాగరుడైన మీరు కాదనలేరు అన్న మాటకు ఆ రోజు జరిగిన సంఘటన ఒక నిదర్శనం. దీనజన పోషక, ఆర్తత్రాణపరాయణ, మా శ్వాస నీవు, మా ఆశ నీవు, మా తలపు నీవు, మా గెలుపు నీవు, మా కలవు నీవు, మా కల్పన నీవు, మా ఊహ నీవు, మా ఊరట నీవు, మా సర్వస్వం నీవు స్వామి. స్వామి, నీవు లేనిదే మేము లేము. సాయిరాం. Swami, it was in the year 2009 when I was just 4 years old that I came in contact with you. My first indication that I am under your care, under your wing. It was at the home of my parents' relatives where your presence was always felt, answers always given. I had the chance to write to you a letter to join your school, to stay near you, study under your guiding eye. After writing the prayer-filled letter, I fell asleep on the carpet of the Mandir along with my younger sister. After a while, my parents came into the room. To their utter surprise, they saw kumkum smeared on both of us. And as they walked in to read the letter that I had written, they were in tears of joy to your reply, "Main kar dunga," meaning I shall do it. Swami, needless to say, that year I got into your school, and within the span of 2 years, my sister too got in. Swami, I'm very grateful to you for all you have done for me and everyone seated here, taken us down the right path, molded us to what we are today. Swami, I love you, Swami. We love you. స్వామి, మీరు నా చిన్నప్పటి నుండి మీ చల్లని చూపులు నాపై మరియు నా కుటుంబ సభ్యులపై ఎల్లప్పుడూ కురిపిస్తూనే ఉన్నారు. నేను ఈ విషయం అనుభవపూర్వకంగాను మరియు నా తల్లిదండ్రుల ద్వారా తెలుసుకున్నాను. నేను పుట్టినప్పుడు నా నామకరణం రోజున నవగ్రహ హోమం జరిగింది. ఆ హోమం జరుగుతున్నప్పుడు పూర్ణాహుతి సమయాన హోమగుండంలో మీరు ప్రత్యక్షమై అభయహస్తముతో మమ్మల్ని అందరినీ దీవించారు. ఆ రోజున పూజా కార్యక్రమం తర్వాత ఆ వీడియోని చూస్తుండగా ఈ అద్భుతాన్ని మా కుటుంబ సభ్యులు గ్రహించారు. మరొక సంఘటన నేను ప్రైమరీ స్కూల్లో చదువుకుంటున్నప్పుడు జరిగింది. మా కుటుంబ సభ్యులందరూ కారులో మా అమ్మమ్మ గారి ఊరికి వెళుతుండగా పెద్ద కారు ప్రమాదం జరిగింది. కానీ కారులో ఉన్న వారందరికీ ఏ చిన్న గాయము లేకుండా మీరే వారందరినీ రక్షించారు. మీ నిరంతర నామస్మరణమే మాకు రక్షగా నిలిచిందని మా ప్రగాఢ విశ్వాసం. స్వామి, మీరు ఇలా ఎల్లప్పుడూ మా ఇంట వెంట జంట ఉంటూ మాపై మీ నిరంతర కృపను చూపించమని అర్థిస్తున్నాను. సాయిరాం. आओ सुनाओ तुम सबको इस प्यार की एक कहानी, इतनी शीतल, इतनी कोमल, जैसे नदियों का बहता पानी। जिस तरह नदियां आखिर सागर से हो मिल जाती हैं, अपने चंचल अस्तित्व को सागर में ही खो जाती हैं। जब नजरें नजरों से मिलती है तो इश्क हो जाता है और आशिक अपने आप को इश्क में खो जाता है। ये इश्क नहीं और क्या जो हो गया है आपसे,
आपसे ही ये दिन शुरू हो और खत्म हो आपसे। दिल ए तमन्ना अब यही है कि साथ आपके रहूं, आपके बिना मैं इस जिंदगी का क्या करूं। आंचल में कैसे बटोरूं, प्रेम इतना ज्यादा है, ये तेरी मेरी कहानी ही तो दास्ता ए वादा है। साई बस इतनी सी है मन की ख्वाहिश कि कबूल कर लो हमारे दिल की गुजारिश। चाहे जितना भी दूर हो हमारे बीच का फासला, हमेशा अटूट रहेगा हमारे दिलों का वास्ता। जब जब हम रूठे तब तुमने हमें मनाया, जब जब हम गिरे तब तुमने हमें उठाया, हमारे हर एक कदम पे तुमने हमारा साथ निभाया। हम जैसे भी हैं ओ साई तुमने हमें अपनाया। ये जिंदगी उधार है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका प्यार है। आपके चरणों में ये जिंदगी कुर्बान, साई आप ही हो हमारे जिस्म ओ जान। खोया खोया सा रहता हूं जब से छाया है तेरा खुमार, आओ साई तुम्हें सुनाए अपने दिल की पुकार।
भगवान के दिव्य चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। स्वामी, जब मेरा जन्म हुआ था तब मेरे कान के पर्दे में एक छेद था, इस वजह से मेरा कान बहता था। भगवान की कृपा से मुझे प्राइमरी स्कूल में दाखिला मिल पाया। उस छोटी उम्र में एक हॉस्टल में संभलना बहुत कठिन था। मेरे माता पिता मेरे लिए चिंतित थे। मैं भगवान के विद्यालय में पढ़ने का सौभाग्य खो सकता था क्योंकि मैं अस्वस्थ रहता था। सन 2016 में मैं और मेरे माता पिता दिल्ली के एम्स अस्पताल में अनेक चिकित्सकों से मिले, परंतु कोई उपाय नहीं मिला। उन्होंने कहा कि उस छोटी उम्र में कान नाजुक होता है, इसीलिए उसे ठीक कर पाना कठिन है। मेरी दिलो तमन्ना थी कि मैं भगवान के विद्यालय में पढ़ूं, परंतु मेरी आशा कम होती गई। मेरे माता पिता स्वामी पर विश्वास रखकर मुझे उनके चरणों में समर्पित कर दिए। उन्होंने मुझे वापस प्राइमरी स्कूल में भेजा। भगवान की असीम अनुकंपा से मैं वापस प्राइमरी स्कूल में आ सका। स्वामी की अनुग्रह से उस दिन के बाद मेरा स्वास्थ्य भी अच्छा होने लगा और आज अगर मैं स्वस्थ हूं तो स्वामी वो आप ही की वजह से है। तहे दिल से शुक्रिया स्वामी, तहे दिल से शुक्रिया। This incident occurred when me and my family were living in Bengaluru 2 years back. Due to unfortunate circumstances, my father was admitted in a heart hospital after he complained of chest pain. The hospital people informed my mother that my father had heart attack and of his critical condition. And upon learning this, my mother was worried because this was the third time that my father was going through this. She rushed to the hospital, and as she arrived, the doctor started pestering her for money. And due to the financial crisis at home, my mother was rendered helpless. Our only hope and refuge was you, Swami. So my mother decided to bring my father here to the super specialty hospital, even despite the doctors warning her. We accompanied father in an ambulance, and when I looked at my father's condition, I couldn't control my tears. I began to visualize you, Swami. I sang your bhajans for the entire journey of 3 hours. And with your grace, we reached Perthi safely. Despite the COVID-19 restrictions, my father was taken into the super specialty hospital. And Swami, doctors wouldn't believe my mother when she said, we came from Bangalore. They said it was practically impossible and my father wouldn't have survived. His condition was so serious that as soon as he came, he was put on a ventilator. Not only that, Swami, you extended my father's life by 1 month so that we all could spend some time with him. Even though now my father merged with you, Swami, with you by my side, I never felt any void of loneliness or sorrow. You've always been there for me, and you'll continue to guide, guard, and protect me, and for which I can never thank you enough. Love you, Swami. स्वामी, आपके चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। मुझे आपके विद्यालय के बारे में मेरे बड़े भाई के द्वारा मालूम पड़ा और उस वक्त मैं 9वीं कक्षा में था। तभी से मेरे भीतर आपके विद्यालय में पढ़ने की इच्छा जागृत हुई। मेरी इसी दिली इच्छा को पूरा करने के लिए आपने मुझे 2020 में 11वीं कक्षा के विद्यार्थी के रूप में जुड़ने का अवसर दिया। इस अवसर को ना खोते हुए मैंने प्रवेश परीक्षा लिखी और मुझे अपने भाग्य पर विश्वास ही नहीं हुआ जब मुझे मालूम पड़ा कि परती में पढ़ने के लिए मेरा चयन हो गया है। मैं बहुत खुश था, किंतु कोरोना महामारी के कारण मुझे करीबन 1.5 वर्ष तक यहाँ आने की प्रतीक्षा करनी पड़ी। लेकिन सही कहते हैं कि ईश्वर के दर पर देर है, अंधेर नहीं। मुझे मात्र 8 महीने ही इस पावन धरती पर रहने और सीखने का मौका मिला है, लेकिन इतने छोटे से समय काल में ही स्वामी आपने मुझे बहुत कुछ प्रदान कर दिया। मैं पहली बार घर से बाहर निकला और घर जैसा स्नेह एवं मार्गदर्शन पाया। स्वामी, आपने मेरी कड़ी परीक्षा तो ली, लेकिन साथ ही मेरा हाथ भी थामे रखा। नए वातावरण में अनुकूलित होने में समय लगा। कुछ घटनाओं ने मेरा आत्मविश्वास भी हिला दिया, किंतु आप पर मेरा अटूट विश्वास और आपका मुझ पर आशीर्वाद मुझे वापस मजबूत बना लाया। आपने मुझे हिम्मत दी, मुझे साहस दिया
मुझे निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी किया। स्वामी, आपका यह पुत्र आपके दिए गए साहस और धैर्य के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता है और इन गुणों को आजीवन धारण करने का संकल्प लेता है। साई राम। Swami, as a bubbly 4-year-old, I came as part of the Parthi Yatra group and was given the opportunity to offer a bouquet to you. While coming down the dais, I happened to trip and fall on one of the steps. Seeing this, a chuckle came on your face, and then you gave me the most beautiful smile. After a while, you called me and blessed me with a chain. Swami, you instilled confidence in us that you'd be there by our side to pick us up whenever we fall. You also encouraged us to learn myriad skills and gave us opportunities to offer them back to you. Oh Lord, those very feet which stumble are here today to dance to your tunes and bring a smile on your face. Oh cosmic dancer, please accept this humble offering of love and gratitude in the form of a dance presentation. जिसकी तलाश थी मिला वो हमें दिल के ही पास में, उसने हमें गले लगाया, थाम कर हमें चलना सिखाया, उसने प्यार से हमको सवारा, सांसें कहे ये जीवन तुम्हारा, अर्पण उसे ये जिंदगी, तुमसे ही जीवन हमारा।
साईराम भ्राता इतीश साईराम भ्राता मोघः शीघ्रतया 10 वर्षाणि व्यतीतानि न वा? आम खलु व्यतीतानि भ्राता, परन्तु वयम् एतानि वर्षाणि विस्मर्तुं न शक्नुमः, कारणम् एतानि 10 वर्षाणि वयं स्वामिना सह व्यतीतानि भ्राता। निश्चयेन भ्राता, अविस्मरणीयानि एतानि 10 वर्षाणि। अहं सर्वदा अनुभवामि यत् स्वामिं विना जीवनम् आशारहित अन्तः भवति, स्वामिनि सति जीवनम् अनन्त आशा भवति। सम्यक्, वयं स्वामिनं प्रति कृतज्ञता दर्शयितुं न शक्नुमः, इति कारणात् यः अस्मभ्यं सर्वं ददाति। स्वामिनः निस्वार्थप्रेमं येन किञ्चित् वयं कुर्मः, एतानि सर्वाणि अस्माकं कृतज्ञतां दर्शयितुम् अपर्याप्तम् एव। कथम् अस्माकं कृतज्ञता प्रदर्शयितुं शक्नुमः? केवले कार्यक्रमस्य आयोजनं कृत्वा वा? न भ्राता, परन्तु दैनन्दिनजीवने स्वामिनः मूल्यानाम् अस्माकं जीवने अभ्यासं कृत्वा तदा एव शक्नुमः प्रदर्शयितुम्। अस्तु, भगवतः दिव्यप्रेमस्य प्रचारं प्रसारं कृत्वा वयं कृतज्ञता श्रेष्ठरूपेण प्रदर्शयामः। धन्यवादः स्वामी, धन्यवादः। To the one who is all-knowing, to the one who is ever-caring, and to the celestial healer, I wish to narrate an incident pertaining my mother and offer it to him with gratitude in my mother tongue, Tamil. O Abad Bandava, Anatha Rakshaka, உன்னால் ரட்சிக்கப்பட்டவர்களில் ஒருவர் என் தாய். அவர்களின் நன்றி கடனை தெரிவிக்க வார்த்தைகள் போதாது, அவர் கண்ணீரை அதை வெளிப்படுத்தும். பல வருடங்களாக செய்து கொண்டிருக்கும் ஆராய்ச்சி பல பிரச்சனைகளால் தடைப்பட்டது. அந்த மன கஷ்டத்தினால் என் தாயின் உடல் நலம் குன்றியது. வைத்தியம் நாடி சென்று தவறாக சிகிச்சை செய்ததனால் என் தாய் 100% செயலிழந்தாள். இந்நிலையில் பல மாதங்கள் கஷ்டப்பட்டாள். காயத்ரி மந்திரத்தின் உச்சரித்தல் மட்டுமே சிறு சிறு வேலைகளை மட்டும் செய்ய அனுமதித்தது. ஒரு நாள் எங்கள் வீட்டில் இருக்கும் உன் சிம்மாசனத்தின் அருகே சென்று ஆராய்ச்சியை முடிக்க இயலவில்லையே, பல வருடங்கள் வீணானதே என்று கண்ணீர் விட்டு வருந்தினார். உறங்கவிருக்கும் போது உன் தர்ஷனத்தை உணர்ந்தாள். சுவாமி, நீ என் தாயின் காதருகில் சென்று PhD-யை தொடர்ந்து செய் என்று கூறிய சொற்கள் பெரும் தாகத்தில் இருப்பவர்க்கு நீர் கொடுத்தார் போல் என் தாயிற்கு புத்துயிர் கொடுத்தது. அன்னிலிருந்து என் தாய் குணமடைய ஆரம்பித்தார். அடுத்த 2 வருடங்களில் ஆராய்ச்சியை முடித்து PhD பட்டத்தையும் பெற்றார். கடவுளை நம்பினோர் கைவிடப்பட மாட்டார் என்னும் வாக்கிற்கு என் தாயே ஒரு உதாரணமாவார். ஹிருதயத்தில் வசிக்கும் சுவாமி, எந்த நன்றி கடனை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். சாய்ராம். Swami, on Christmas Day 2001, my mother, along with my 2-year-old sister, was seated for your darshan at the Sai Ramesh Hall in Vrindavan. That day, you were specially interacting with the Anandpur alumni, of which my mother is a part. On that chilly winter morning, as you were giving darshan, you walked towards my mother and spoke to her lovingly in Telugu, saying, "Pillaki challi challi," meaning the girl is feeling cold. My mother then covered my sister, who was shivering in the cold, with her sari. Later that day, during the evening darshan, you gave my mother a sari and blessed her and my sister profusely. As you were walking away, you suddenly stopped and looked back straight into my mother's eyes and said, "Isari pilla vaadthora," meaning come back with the sun. Swami, 2 years later, I was born, but the story didn't end there. At the time of my birth, my mother was diagnosed with a condition called placenta previa, which could lead to possible fatal complications during the delivery. The doctors even advised my mother to terminate the pregnancy. However, my mother decided to go ahead with the delivery, for it was you who had told her, "Come back with the son." She firmly believed that nothing could come in the way of your divine sankalpa. Swami, by your grace, I was born hale and hearty. But after the delivery, my mother's condition began to deteriorate. She had lost a lot of blood.
Unfortunately, there was no O positive blood available in the hospital's blood bank. My father rushed to bring blood critical to save my mother's life. But soon, he got caught in a traffic jam and received a call from the doctor asking him to hurry as they were losing my mother. My father reached the hospital with the blood only to see the doctors frantically trying to revive my mother as they were losing her. But there was no sign of a pulse. The doctors went on to declare my mother as dead and all hope seemed lost. Swami, my father applied vibhuti blessed by you on my mother's forehead and prayed to you fervently. Suddenly, a surgeon who was operating nearby approached my mother's body and gave her defibrillations again in a final effort to revive her. Soon, there was a faint sign of a pulse. Blood was transfused to my mother and the pulse only grew stronger. Swami, you brought back my mother from the clutches of death and gave her a new lease of life. Swami, before my mother had lost consciousness, she saw an orange figure standing near the saline stand. It was none other than you, Swami. O Saima, the love and affection you have showered upon me is greater than that of 1,000 mothers. The very reason I exist is because of you. I pray that you give me the strength to surrender to your divine will. I love you, Swami. I love you.
an innocent 6-year-old let go of his mother's hand to enter an uncertain world of infinite possibilities. Excited to take on a new journey, but hesitant at the very first step. Holding his hand and urging him on, you, the divine mentor, gave him the promise of guidance. When the sun shone bright and he knew no sorrow or fright, when life was a bed of roses and there was no dearth of smiles, when he could see your footsteps alongside his, sharing his happiness and offering him camaraderie, you, the divine friend, gave him the promise of companionship. When dark clouds filled the skies and the dreary blizzards of despair snuffed out the flickering flame of hope, when the storm carried the petals away, leaving a trail of thorns in its wake, and when his close ones too walked away, leaving not even a trail to follow, when he looked back and found to his dismay a set of footprints had disappeared along the way. Lord, your comforting voice reassured him that it was you carrying him through the storm. You, the divine guardian, gave him the promise of protection. When the first rays of light broke through the clouds, the storm had washed a path ready for him to tread. All the way to the horizon, the path lit up by a brilliant rainbow. And there he saw you, arms wide open, calling out to him. With a heart overflowing with gratitude, a soul ready to be redeemed, and his being pining to surrender, he took one step towards you. Out of your infinite love, you rushed 100 miles towards him. The clouds ran out of rain, and tears ran down his cheeks to sing the song his heart couldn't. In your affectionate caress, you, the divine mother, gave him the promise of love. విద్యార్థులారా, నేనెప్పుడు మీ వెంటనే జంటనే ఇంటనే ఉంటుంటాను. Bhagavan is always with you, in you, around you, above you. కనుక మీరందరూ కూడా ఐకమత్యంతో పనిచేయండి. Work with the feeling of unity. నా సీటు ఇక్కడ కాదు. Bhagavan's seat is not here. నా సీటు మీ యొక్క హృదయమే. Bhagavan's chair is your heart. కనుకనే మీరు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ కూడా స్వామి ఉంటున్నాడు. Swami is there wherever you are. ఏ కొరతలు మీకు జరగవు. Nothing will happen to you. ఏ విధమైనటువంటి అపజయాలు మీకు జరగవు. You will never have failure. కానీ పరిపూర్ణమైన విశ్వాసంతో మీరు పనిలో ప్రారంభించండి. Work with the total faith. ఏ పని చేసినప్పుడు ఇది భగవత్ కార్యంగా భావించండి. Whatever you may do, good work, take it as God's work. And that child is at your door today. You guided us as a teacher, stayed by our side as a friend, protected us as a father, and loved us as a mother. On this day, O Sai Ma, bless us that in happy moments we praise you, in difficult moments we seek you, in quiet moments we worship you, and in every moment, Swami, we thank you. Today, we give you the promise of gratitude. Once I was a little boy, standing outside primary school. My entrance exam I was waiting to give. You came in your car and waved at me, a sight I shall remember as long as I live. Once I was a little boy, sitting in this very hall, waiting for you to come my way. You called me and asked me in my mother tongue, Timro naam ke ho? And that made my day.
Swami, you placed our applications on your lap and personally handpicked each one of us, planted us in your garden of love, showered us with grace, and pruned us into what we are today. You fulfilled even the smallest of our desires, even before the thought to express it crossed our minds. You provided us with every little need and gave us what was best for us. Swami, you knew everything, and yet you asked us simple questions only so that we could get the golden opportunity to talk to you. As we stand here recollecting these sweet memories, our eyes grow moist with tears, and yet we put a smiling face only because you said our happiness is your happiness, Swami. You did not just give us a promise of free education, but also a promise to take control of our lives, a promise to be with us in our highs or lows, a promise to be there in these uncertain times when the world is in chaos. Your presence is felt more than ever, guiding humanity at every step. Swami, everything around us may change, but you are the constant in this ever-changing world of ours. We know that you expect nothing from us, and yet our hearts are so filled with gratitude and love that we want to put our hand in yours and make a promise. A promise to be grateful for every moment of our lives, be it big or small, bright or dark. For we know everything is your will, and by your will shall we stand, with your form in our hearts and your name on our lips. And what better way to thank you than to just think of you and remember you every day in our lives. We love you, Swami. We love you. Grateful we are hereafter and forever. साई नाम लेने का करते हैं हम वादा, यही है दास्ता ए वादा, यही है दास्ता ए वादा. बेचैन दुनिया को देख ना रहा मेरे गम का ठिकाना. इन लोगों ने अब तक ये न जाना साई नाम है अनमोल खजाना. देखो साई नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताए क्यों जब प्राण तन से जाएंगे छूट. ओ मेरे साई बाबा तेरा हम नाम लेंगे, तुझे है कसम हमारी तेरे लिए जान देंगे. कि साई नाम सारा जग देखो गुनगुनाएगा. मेरे साई बाबा तेरा हम नाम लेंगे, तेरे लिए जान देंगे. तेरा हम नाम लेंगे, तेरे लिए जान देंगे.
प्याला पिया है, देखो इसको क्या अनजाने नशा आता है, कि गम और खुशी तो क्या खुद को भी भूल जाता है, खुद को भूल जाता है, खुद को भूल जाता है, चाहे आज़मा ले ये साई नाम के प्याले, चाहे आज़मा ले ये साई नाम के प्याले, जो चाहे आज़मा ले साई नाम के प्याले, जो चाहे आज़मा ले साई नाम के प्याले, गम को खुशी में ये बदलने वाले, जो चाहे आज़मा ले ये साई नाम के प्याले। मगर इस दुनिया का एक बड़ा सवाल है, वो क्या पूछो तो इस जलते हुए जमाने का देखो क्या हाल है, तड़प रहा है इंसान देह की मशाल है, तड़प रहा है इंसान देह की मशाल है, तड़प रहा है इंसान देह की मशाल है, हर किसी की जिंदगी गम से बेहाल है, दुनिया का ये सवाल वो तो गम से बेहाल, दुनिया का ये सवाल वो तो गम से बेहाल, दुनिया का ये सवाल वो तो गम से बेहाल। ये तो कमाल है कि इंसान का ये सवाल है, जब इंसान इंसान ही न रहा, वो तो बन गया हैवान, वो तो बन गया हैवान, सभी का इम्तिहान, वो तो बन गया हैवान, फिर भी अगर जो बचने का है तेरा इरादा, भगवान तक पहुँचने का है तेरा इरादा, तो कर ले साई नाम लेने का तू आज वादा, यही तेरा इरादा तो कर ले आज वादा, यही तेरा इरादा तो कर ले आज वादा। कर ले साई नाम लेने का कर ले तू वादा, साई नाम लेने का कर ले तू वादा, कि साई नाम सारा जग देखो गुनगुनाएगा, तेरे साई बाबा तेरा हम नाम लेंगे, तेरे लिए जान देंगे, तेरा हम नाम लेंगे, तेरे लिए जान देंगे, तेरा हम नाम लेंगे, तेरे लिए जान देंगे, बोलो सत्य साई राम, 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 बोलो सत्य साई राम। शुक्लांबरधर गणपति मंत्रम शुक्लांबरधर गणपति मंत्रम शुक्लांबरधर
नित्यं नित्यं जपो जपो नित्यं नित्यं जपो जपो विघ्न विनाशक विश्वं व्यापक विनाशक विश्वं व्यापक विघ्न विनाशक विश्वं व्यापक विघ्न विनाशक विश्वं व्यापक वीर गणपति भजो भजो वीर गणपति भजो भजो वीर गणपति भजो भजो वीर गणपति भजो भजो शुक्लांबरधर गणपति मंत्रम शुक्लांबरधर गणपति मंत्रम नित्यं नित्यं जपो जपो नित्यं नित्यं जपो जपो विघ्न विनाशक विश्वं व्यापक विघ्न विनाशक विश्वं व्यापक वीर गणपति भजो भजो वीर गणपति भजो भजो वीर गणपति भजो भजो वीर गणपति भजो भजो शुक्लांबरधर गणपति मंत्रम जय हरि बोल जय सीताराम गोपी गोपाल भजो राधेश्याम जय हरि बोल जय सीताराम गोपी गोपाल भजो राधेश्याम जय हरि बोल जय सीताराम गोपी गोपाल भजो राधेश्याम जय हरि बोल जय सीताराम गोपी गोपाल भजो राधेश्याम हरे राम 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 घन श्याम 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 श्री रघुनंदन श्री रामा दशरथे जय रघुरामा 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 नंद किशोरा नवनीत चोरा वृंदावन गोविंद लाला 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 हरे राम 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 घन श्याम 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 जय हरि बोल जय सीताराम गोपी गोपाल भजो राधेश्याम जय हरि बोल जय सीताराम गोपी गोपाल भजो राधेश्याम हरे राम 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 घन श्याम 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 हरे राम 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 घन श्याम 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 श्री रघुनंदन श्री रामा दशरथे जय रघुरामा श्री रघुनंदन श्री रामा दशरथे जय रघुरामा नंद किशोरा नवनीत चोरा वृंदावन गोविंद लाला नंद किशोरा नवनीत चोरा वृंदावन गोविंद लाला राम 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 घन श्याम 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 हरे राम 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 घन श्याम 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 हरे राम 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 घन श्याम 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 हरे राम 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 घन श्याम 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 जय हरि बोल जय सीताराम गोपी गोपाल भजो राधेश्याम इंदुशेखरा राजा शिव राजा शंकरा इंदुशेखरा राजा शिव राजा
इंदुशेखरा शंभो शिव राजा शंकरा हे इंदुशेखरा शंभो शिव राजा शंकरा हे हर हर शिव शिव पिनाक वैभव राजा शंकरा हे हर हर शिव शिव पिनाक वैभव राजा शंकरा राजा शंकरा शिव राजा शंकरा शिव राजा शंकरा शिव राजा शंकरा हे इंदुशेखरा राजा शिव राजा शंकरा साई साई स्मरण करो साई साई स्मरण करो साई साई स्मरण करो साई साई स्मरण करो गुरु चरण कमल ध्यान 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 करो साई साई स्मरण करो साई साई स्मरण करो केशव माधव भजन करो केशव माधव भजन करो केशव माधव भजन करो केशव माधव भजन करो सद्गुरु साई सेवा करो सद्गुरु साई सेवा करो श्री सद्गुरु साई सेवा करो श्री सद्गुरु साई सेवा करो साई साई स्मरण करो साई साई स्मरण करो गुरु चरण कमल ध्यान करो गुरु चरण कमल ध्यान करो साई साई स्मरण करो साई साई स्मरण करो केशव माधव भजन करो केशव माधव भजन करो सद्गुरु साई सेवा करो सद्गुरु साई सेवा करो श्री सद्गुरु साई सेवा करो सद्गुरु साई सेवा करो साई साई स्मरण करो रघुवीर रणधीर राम 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 वीर रणधीर राम 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 रघुवीर रणधीर राम 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 रघुवीर रणधीर राम 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 रघुमाई विठ्ठला श्याम 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 सुकुमार सुंदर राम 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 शिरडीश परतीश श्याम 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 रघुवीर रणधीर राम 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 रघुवीर रणधीर राम 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 रघुमाई विठ्ठला श्याम 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 रघुमाई विठ्ठला श्याम 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 सुकुमार सुंदर राम 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 सुकुमार सुंदर राम 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 शिरडीश परतीश श्याम 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 शिरडीश परतीश श्याम श्याम श्याम
परतीश श्याम 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 शिरडीश परतीश श्याम 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 रघुवीर रणधीर राम 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 रहीमन रहीमन राम रहीम रहीमन रहीमन राम रहीम रहीमन रहीमन राम रहीम रहीमन रहीमन राम रहीम साई राम कृष्ण करीम साई राम कृष्ण करीम साई राम कृष्ण करीम साई राम कृष्ण करीम बुद्ध सुराष्ट्र नानक साई बुद्ध सुराष्ट्र नानक साई बुद्ध सुराष्ट्र नानक साई बुद्ध सुराष्ट्र नानक साई यीशु पिता प्रभु साई तुम हो 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 भजोरे मनवा राम रहीम भजोरे मनवा राम रहीम भजोरे मनवा राम रहीम भजोरे मनवा राम रहीम राम रहीम साई कृष्ण करीम 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 रहीमन रहीमन राम रहीम रहीमन रहीमन राम रहीम साई राम कृष्ण करीम साई राम कृष्ण करीम बुद्ध सुराष्ट्र नानक साई बुद्ध सुराष्ट्र नानक साई यीशु पिता प्रभु साई तुम हो यीशु पिता प्रभु साई तुम हो भजोरे मनवा राम रहीम भजोरे मनवा राम रहीम राम रहीम साई कृष्ण करीम 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 रहीमन रहीमन राम रहीम हरि हरि ओम शिव शंकर ओम 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 नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम केशव है जय माधव है केशव है जय माधव है नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी
गोविंद कृष्ण जय गोपाल कृष्ण जय गोपाल बाल बाल राधा कृष्ण जय गोविंद कृष्ण जय गोपाल गोविंद कृष्ण जय गोपाल कृष्ण जय गोपाल बाल बाल राधा कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण 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 जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण 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 जय कमाल हारी प्यारी माई मीर हारी हरण मोर उड़ीदार कृष्ण जय कमाल हारी प्यारी माई मीर मन विहार मदन मोहन कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण 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 जय कृष्ण जय राम कृष्ण जय राधा कृष्ण जय बाल कृष्ण 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 जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण 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 जय गोविंद कृष्ण जय गोपाल कृष्ण जय गोपाल बाल बाल कृष्ण जय गोविंद कृष्ण जय गोपाल कृष्ण जय गोपाल बाल जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे भक्त जना संरक्षक भक्त जना संरक्षक अति महेश्वरा ओम जय जगदीश हरे शशिवदना श्रीकरा सर्वा प्राणपते स्वामी सर्वा प्राणपते आश्रित कल्प
ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। 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 ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्।